Okay, Srikanth, welcome to YourPedia. Thank you, sir. Okay, so let's start your full mock for NEEPCO. Before starting your mock, can you please give your brief introduction? Yes, sir. First of all, thank you so much, sir, for giving me the opportunity to speak about myself. My name is Srikanth Yadav, and I belong to the Kanpur UP. And I have done my schooling from the Kanpur UP, and after that, I have done my B.Tech from the Gurukul Kangadi Viswavidyalaya, Haridwar. After that, I have done my MTech. I have joined the MTech by giving GATE, and I joined my GATE in the power and energy system. And my MTech thesis topic is the model predictive control in the active distribution system in microgrid. And talking about my extra curricular activities, I like to play the badminton and reading spiritual books, and I have also participated in the social activities like the NCC, and that's it. Thank you, sir. Okay. Yes. Sir, I am audible. Hello. 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 Okay, sorry for the. Okay, Srikanth. I am audible, sir. You are audible. Yes. Okay, Srikanth. So from which place you are belonging? Sir, Kanpur. Kanpur. Yes, sir. Okay. Okay, so you have done the MTech also? Yes, sir. I have done MTech also, sir. Okay. So you have done your MTech in what do microgrids? What do you have said? Power energy branch is power energy system, and my MTech thesis topic is related to model predictive control in the active distribution system in the microgrid. Microgrid. Okay, before going to the microgrid, one note about yourself. You are joining from the Kanpur. Yes, sir. So, okay, so it's your first job, or you have done your job any job earlier? No, sir. It is my first job. Till now, I am doing the MTech and various courses. Okay, so are you comfortable in English, or should I proceed in the Hindi? No, also? in English, In whichever sir. language you are comfortable. No. Both language I am comfortable, sir. No ऐसा कुछ problem. नहीं है. Yes, sir. Hello. ऐसा नहीं है कि नंबर ज्यादा आते हैं. जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में बोलिए. नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बोल सकते हैं. Okay, you are belonging from the Kanpur. So, what is the specialty of the Kanpur? Basically, the major specialty of the Kanpur, it is called the Manchester of North. It is called the Manchester of North because the cotton industries was the major one here, and secondly it is the major production of the leather. In foreign, most of the leather is produced from the Kanpur in UP. The other things about the institute wise we talk about, then there is IIT Kanpur, and at state level there is HPTI. Okay, in which year IIT Kanpur has got its name? IIT Kanpur got its name, sir, I don't remember. Okay, being an electrical engineer, do you know what is the installed capacity of the UP? UP installed capacity.
Yes. I think 1 lakh megawatts, sir. Hello. 1 lakh megawatt is how much? 1 lakh megawatt is how much gigawatt? Hmm, 1000 1024 megawatt 1000 megawatt in gigawatts. Okay. Hello, sir. हाँ जी बताइए. Yes, sir. अच्छा एक चीज बताइए, Yes, अगर sir. यूपी के पास में है, ये लोड डिस्पैच सेंटर का क्या इम्पोर्टेंस है? Load dispatch center, sir. पावर Load dispatch. Hello, sir. हाँ जी बताइए. Sir, load dispatch center is basically the from where there the various load capabilities loads are provided from there to the various centers. To the इंडिया various में कितने लोड इंडिया में कितने लोड डिस्पैच सेंटर है? I don't remember. I remember. अच्छा एक चीज बताइए. Yes, sir. आपने हमका आप जो इंटरेस्ट है वो माइक्रोग्रिड सिंक्रोनाइजेशन पे है. अच्छा ये माइक्रोग्रिड, अच्छा माइक्रोग्रिड होता क्या है और ये माइक्रोग्रिड सिंक्रोनाइजेशन होती कैसे है? Sir, basically, microgrid is the small planning of the generating system of the various we can combine the solar, wind, and various small energy sources and their combination, and we can provide it at locally level at their best level, and also we can use the microgrid for the boost up of the our transmission line, because sometimes our transmission line is failing with the voltage drop. So we can also provide with the voltage boost up through the microgrid, so that the voltage problems can be avoided. And with their synchronization, presently the major issues of the microgrid with the synchronization of the generating system is the synchronization of them. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ Synchronization of microgrid with the generating conventional this distribution system which are अच्छा currently श्रीकांत लिसन is श्रीकांत prevailing. श्रीकांत With the लिसन microgrid, हाउ वी we are trying कैन to step. Yes. Okay, what Yes, are the sir. method of synchronization? जब आप विंड एनर्जी को सिंक्रोनाइज करते Sir, हैं बाकी अदर फॉर्म में. sir, what I have read about the method of synchronization is the through dark lamp method. Synchronization by These are the dark method for the AC to yes, these are the yes. method of synchronization of AC coming to AC. I'm asking about the wind energy because the wind is not constant. So how you can maintain the constant speed so that it can synchronize with the infinite bus or any bus system? Sir, we can use the we can use the inverter, sir. Synchronize करेंगे कैसे? Combination of the power or electronics equipments के through, sir. Yes, sir. इन्वर्टर से सिंक्रोनाइज कैसे होता है? Sir, basically inverter is the frequency changing device. So through that we can synchronize its with the other. चलिए ठीक है.
अच्छा एक चीज बताइए, स्मार्ट ग्रिड क्या होता है? Yes, sir. व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड? The smart grid, sir, is basically this is the combination of the solar, wind, solar, wind, and conventional energy sources. Conventional and non-conventional energy sources combination with them is called the smart grid, and the proper with this the voltage and the system parameters are well controlled of the system, that is called the smart grids. Okay, how you can what make the grid smart? Sir, grid, because conventionally we are only depending upon the thermal, we are saying the thermal and nuclear power plants, we are basically depending on that. But nowadays the various sources are available, like the solar, we are working on the solar, wind, and with the combination with the thermal, nuclear. With this combination, we can make a smart grid. With that one, we can control the various parameter like voltage, frequency, maintaining, etc. Voltage and Voltage and frequency, sir, and also the power flow. okay, when we talking about the smart grid, it is said to Yes. be the digital two-way communication. Yes, sir. Okay, what does it mean as the digital two-way communication? Digital two-way communication. Hmm. I think, sir, whatever the digital two-way communication, sir. Hmm. Sir, I'm not exactly remembering about this one. So सोलर पावर सोलर पावर से जो गवर्नमेंट इनिशिएशन देती है, उसके बारे में कुछ Yes, sir. पता है आपके स्टेट में? सोलर पावर से गवर्नमेंट जो इनिशिएशन देती है, सर। सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए जो गवर्नमेंट जो आपका इंसेंटिव जो प्रोवाइड करती है, उसके बारे में कुछ आइडिया है? इंसेंटिव, सर, नहीं सर, ज़्यादा आइडिया नहीं है सर, इसके बारे में पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी, यस सर। इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या एम था? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी, पॉलिसी सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी में सर रूलर से रिलेटेड, सर, जैसे हम लोगों को अब रूलर में भी जैसे है कि सोलर को सोलर को हमको बढ़ावा देना है, जैसे विंड को वी कैन यूज द मोर विंड with that integrated with the conventional sources, because there is a bigger problem of the voltage drop in the villages, like there is a radial filter we are using in the villages, so there is a more much voltage fluctuation in the houses. So the government is trying more and more towards the solar, more solar focused, and also the microgrid type structures should be installed at the more level in that area, so that the power fluctuation problem and voltage fluctuation problems can be reduced. So, okay, nice answer. Okay, suppose you get selected in this post. Post is a yes, sir. management training, na? No, sir, executive engineer training, sir. Executive engineer training. Okay. Yes, sir. Okay, so being as a M.Tech, what will be your contribution if you got a chance? Sir, basically, I have done M.Tech, and I have also written down the one research paper, and the second research paper I am currently writing down. So we can also contribute to the company if company want me to support in the activities about the new ideas which can
be generated in like the company is also. My top microgrids. I am doing the research on the microgrid solar power level. So we can do more research for the company also, so that the company can enhance, can harness the maximum energy as possible from the region. Like the company is working in the northeast region, so maximum utilization of energy can be harnessed through our research works. They can also put in their research works, and also in the field work we can do more and more in the renewable energy resources like the solar and wind company is focusing. So we can also contribute in that area also. Okay, what are the challenges? What are the challenges for the in the transmitting system or the tower installation? What are the challenges in the hilly area, and what how the corona effect will get reduced or will get increased in the hilly area? Any idea? Sir, basically in hilly areas, there is more chances of the corona, and also there is a sag problem. Sag problem because the hilly stations, one hill is connected to the ground, so that there is a sag problem also between the two towers. So these are the two problems which are mostly prevailing, and also transmission of the power is also much more, and so the availability solar and wind energy for the solar, it is quite difficult, because in the hilly areas, or you can in that area there is a in northeast we can say that the solar will be useful, sir. In northeast we can say the solar will be useful because of the much heat and much sun energy, and we can utilize that energy also for the that area, because the transmitting the power and through the wires is the much sag problem, corona problem. Maximum disadvantages are there, so we can harness the energy in the form of the solars. According to me, solar can be more harnessed in the hilly area. Okay, good. Okay, what are the subject you have prepared? Sir, power system and machine, sir. Power system and machines. Yes, sir. Okay. Which part of power system you are more comfortable? I have prepared whole, sir, for protection plus stability, sir. Okay. Okay, just I'm giving you the situation. Suppose there is a system. Take the alternator as the system. Okay. Yes, sir. In the industry, we are using PID controller, proportional, integrative, and derivative controller, Yes, sir. to make the system stable. Yes, sir. Okay. Just give me the idea that what will be the proportional, what will be the integrative, and what will be the derivative. Take the leading and the lagging or synchronous condenser also. Take all these things assumption in a one platform, and just get me the idea that how the alternator is being synchronized and it is being stable. Taking the concerning also that it generate the lagging power factor, it generate the the power containing active and the reactive power both. Depend upon the requirement. Yes, sir. Sir, Take your synchronization of generator, sir, asking about in factories. In the generation. With PID control. In the generation. Yes, sir. In generation of In electrical generation. energy. Generation. Yes, sir. Yes, sir. Sir, basically what I know about the PID controller, proportional integral controller is basically used for the steady state What is steady state error. proportional? What is proportional in alternator?
proportional alternator, sir. Damping constant, sir. Sorry, Damping constant, damping constant is proportional. sir. And what is Sir, integral and what is derivative? Sir, resistance in generator we are considering the resistance can be the Tell treated me as the about proportional, one sir. thing. What do you mean by Yes. stability? Stability, sir, basically stability is the after being given the disturbance. After the disturbance to the synchronous generator, if it become stable by its own, then it is called the stable system, sir. And what is gain? And how the gain affect the stability? Yes, sir. Gain is basically the what is it is generating and what we are feeding. Sir, what we are feeding and what we are getting. Ratio of that we can say that this is the gain, sir. And what is gain margin? Gain margin, gain margin is basically the सिस्टम जब स्टेबल नहीं होता सर तो उसमें कितना हम गेन को एक्स्ट्रा गेन को मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितने एक्स्ट्रा गेन को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि सिस्टम एक स्टेबिलिटी के एज तक को पहुंच जाए सर। तो एक्स्ट्रा गेन जो हम उसमें स्टेबिलिटी यस सर, क्या बोला आपने? स्टेबिलिटी के स्टेबिलिटी के लिए कितना एक्स्ट्रा गेन हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर, ताकि हम स्टेबिलिटी के रेंज तक पहुंच पाए सर। गेन मार्जिन इज व्हाट इज द एक्स्ट्रा गेन टू बी मल्टीप्लाइड। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात को, सुनिए 5 मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुनिए आप। यस सर, एक मेरा अल्टरनेटर होता है, ठीक है? यस यस अल्टरनेटर होता है जो कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर बोथ जनरेट करता है। कभी कभी सिस्टम में क्या होता है, सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सिस्टम की लोड फैक्टर बढ़ जाती है या रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम सिंक्रोनस कंडेंसर का भी यूज करते हैं, ठीक है? यस सर, These all things are combined in the gain. गेन होता क्या है? सिस्टम को अनस्टेबिलिटी के भर्ज तक लेके जाना, ठीक है? यस सर, Gain is a thing that is provided to the system which take the system on the verge of instability, ठीक है? यस सर, एम टू फेल जो बोलते हैं हम, एम टू फेल यानी कि फेल होने से ठीक पहले तक सिस्टम का मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में डिस्टर्बेंस तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, चाहे हम स्टीम वॉल्व कंट्रोल से प्रोवाइड करें या हम अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से प्रोवाइड करें, ठीक है? उसके बाद आता है आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रल। डेरिवेटिव यानी कि सिस्टम को रिगेन करना, सॉरी सिस्टम को गेन प्रोवाइड करना। तो ये सब चीजें जो होती है सिस्टम को गेन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जो है सिस्टम में हम इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन मोटर क्या क्या करती है? लैगिंग प्रोवाइड करती है ताकि सिस्टम को रिगेन कर सके स्टेबिलिटी पे, ठीक है? तो वो जो आप जो ट्रांसफर फंक्शन जो पढ़ते हैं, देखिए इसी में सारा आपका जो इसी चीज में आपका स्टेबिलिटी आ जाता है। और इसी स्टेबिलिटी से इस स्टेबिलिटी के बाद आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, जो भी रिले लगे होते हैं, जो भी सर्किट ब्रेकर रिले होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है, ये सब आता है। उसके बाद बेसिक पावर सिस्टम में एक बार देख के जाइएगा, लोड फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्जेंस फैक्टर क्या होता है, ठीक है? यस सर, रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है,
हॉट रिजर्व क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, फिल्म रिजर्व क्या होता है, हिली एरिया में कोरोना इफेक्ट क्या क्या चीजें होंगी, जैसे जैसा आपने बोला। ठीक है। तो यस सर। और दूसरी चीज, जब हम स्मार्ट ग्रिड की बात करते हैं या माइक्रो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, यस सर। तो यस सर। स्मार्ट ग्रिड मतलब क्या होता है कि डिजिटल टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि फार्मर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंज्यूमर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो प्रोडक्शन वाले हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जो है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दी फार्मर को यस ताकि सर। वो अपने घरों में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, या कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट बना सकें। तो गवर्नमेंट का यही इनिशिएशन है, यूपी गवर्नमेंट के थ्रू। एक बार पढ़ लीजिएगा इस 21 या 25,000 के अराउंड जो है, सो कोई 1 किलोवाट के अराउंड मिलता है उन लोगों को इंसेंटिव। ठीक है। और इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 400 गीगावाट। ठीक है। यू हाँ, और उसमें थर्मल का अलग है, यूपी न्यूक्लियर का का सर, अलग है। यूपी का सर, यूपी का यूपी का एक है, वही यूपी का वन पता नहीं, स्टेट वाइज वन। पता नहीं। नहीं, 1 गीगावाट तो नहीं है, 10 या 15 या 40 के आसपास गीगावाट है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, उसमें स्टेट के भी हैं, सेंटर के भी हैं। और यस सर। इंटरव्यू कब है आपका? सर टुमारो। Tomorrow। आपने स्नैप दिया नहीं सर मेरे को आज, एक। आज डीवी था सर। पहले दे चुका था सर, मैंने पहले भी ज्वाइन कर रखा है सर। तो पहले दूसरे ये सर सब जो लैगिंग है को ना आप में, ये दिया सब था तो लैगिंग निकल जाता पहले पहले कई बार। यस सर। है। ये सब क्वेश्चन कवर हो जाता है जितने भी आपके, और सब जो क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है, पावर जनरेशन पीएसयू से, ये सब कवर हो जाते हैं। देखिए, ज्यादा टेक्निकल वो लोग नहीं पूछते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में, पावर जनरेशन के बारे में, पावर ट्रांसमिशन के बारे में। एक आध दो यस। मशीन, स्पेशल मशीन मशीन पूछ लेते हैं। यस सर। ठीक है, अर्थिंग ग्राउंडिंग क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यस। ओके। यस। और एमटेक जो आपका स्मार्ट यस ग्रिड है, सर। ये ये देखिए, यस विंड एनर्जी को सर। हम कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं? दो ही तो मेथड है मेरे, एसी डीसी, एसी कन्वर्सन यस सर। और डब्ल्यू एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। दो मेथड है मेरे, आप सिंक्रोनोस्कोप पे निकल गए। एसी है एसी। ठीक है, यस सर। कोई क्वेश्चन? और सर टुडे माय डीवी वाज ओवर सर। थोड़ा सा डीवी था तो आज डीवी में ज़्यादा समय लग गया सर, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे सर, कुछ थोड़ा। चलिए बाकी ठीक है। कल तो ठीक है सर। ठीक। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, इस पर थोड़ा काम कीजिए। वैसे जो जो मैंने बोला है ना, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक। सर, मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा सर, इसको पढ़ लूंगा सर अच्छे से। एक बार हो जाइए, सब्जेक्ट ज्यादा मत पढ़िए अब। अभी ये सब चीजें ज्यादा पढ़िए, पॉलिसीज के बेसिक। बारे में, स्कीम के बारे में। ठीक है, यस सर। एचवीडीसी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, जो एचबीडी। कॉमन जो ट्रेंड चल रहा है ना। हाँ, यस। एचवीडीसी जो कॉमन एचबीडीसी के कॉमन बारे में ट्रेंड पढ़ लिया चल, है सर, एचबीडीसी के बारे में जो पढ़ लिया हूँ सर, एचबीडीसी इन सब के बारे में पढ़ लिया है सर। जो कॉमन जो एचबीडीसी टर्म, केबल, हाँ अभी केबल जो के चल बारे रहा में। है ना। यस सर। हाँ, ठीक है। एक एक और केबल देख लीजिएगा, पूछता है आजकल, सबमरीन केबल जो है। यस सर, अच्छे सर। ठीक है, मतलब जो भी तेल निकालने वाली कंपनियां जो होती है ना, वो सबमरीन यस। केबल के थ्रू पावर ट्रांसमिट करती है, तो उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, बाकी ठीक है, कॉन्फिडेंस भी ठीक है। हो सके तो हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, अगर वहाँ पे, कहाँ पे हैं अभी? सर इसमें फिलहाल हम कहाँ पे हैं सर? इंटरव्यू कहाँ होगा? इंटरव्यू नॉर्थ ईस्ट का है सर, नॉर्थ ईस्ट रीजन का। वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे सर, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटर है, आज आप अगर वो। हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। हाँ। आप हिंदी हिंदी में क्या आता है ना कि इंग्लिश इट इज गुड, बट हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे आपका भी यस देखें, सर। जो कॉन्फिडेंस हिंदी में आता है। ठीक है, आप अच्छे से समझा सकते हैं। इंग्लिश में यस वो सर। चीजें नजर नहीं आई, मतलब किसी किसी का इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग होता है। पर सर जहाँ जहाँ आपका जहाँ पे जरूरत पड़ती है सर, वहाँ पर आप बोलते हिंदी में बोल देते हैं सर। ज्यादा हिंदी बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग हिंदी में ज्यादा अच्छा है।
यस सर। ठीक है, जहाँ थैंक यू समझाने सर। की बात है आप हिंदी में समझाया करिए, इंट्रोडक्शन यस सब सर। इंग्लिश में ठीक है, पर समझाने की में अब कॉन्फिडेंस आपका हिंदी में ज्यादा हमको अच्छा लगा। यस सर। थैंक ठीक है, यू सर। चलिए फिर तो थैंक यू सर।